Welcome to Viji's Web Academy. In this session, we shall see CBSE NCERT Class 6 Hindi Vasant Lesson 11 and its exercises. Our sample videos are available at the YouTube channel South to North. Please subscribe to it. You can visit my website www.vijis.co.in. If you have any queries, please mail me at vijiswebacademy@gmail.com or you can WhatsApp to this number. Now, let's move on with the lesson. Jo dekh kar bhi nahi dekhte. So, this is a lesson about the person who cannot see. Okay, she is blind. Okay, the author. So, she is describing the persons who has eyes, how they are looking this world. Okay, so கண்கள் இருக்கிறவங்க இந்த உலகத்தை எப்படி பார்க்கறாங்க, and being blind, how she looks at this world. Okay, so jo dekh kar bhi, dekh kar means the one who can see, nahi dekhte, they don't see the things, some things. What is that? Let us read. Okay, kabhi kabhi main apne mitron ki pariksha leti hu, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं. So, कभी कभी means sometimes what I do, I usually ask my friends. मित्रों की परीक्षा लेती. परीक्षा means I just talk with my friends. என்னோட நண்பர்கள் கிட்ட நான் பேசி அவங்க கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்க விரும்புவேன். என்ன அப்படின்னா, यह परखने के लिए, just to know that what they see, how they see this world, what and all the things they see. वह क्या देखते हैं, அவங்க என்னெல்லாம் பார்க்கறாங்க அப்படிங்கறத பத்தி நான் கேட்பேன். हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी. So, हाल ही means recently. So, recently one of my friend or my best friend, प्रिय मित्र, he or she, okay, she went to a forest. Jungle means forest. Jungle ki sair. Sair means just to have a visit of the forest. So, forest ku poitu vande enoda nanbar kitta na vandu keten. Vapas lauti. She came back. So, I asked her, how was your experience? What and all did you see? मैंने उनसे पूछा. So, I asked her, आपने क्या क्या देखा? So, what are the things you saw? அப்படின்னா கேட்டேன். So, the reply what I got was, कुछ खास तो नहीं. Nothing special. खास means special. खास तो नहीं means I didn't see anything that very special. That was the answer. उनका जवाब था. Okay. So, that was the answer I got in return for the question. Fine. मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ. So, I am not surprised with the answer. Acharaj means to get surprised. I am not surprised with the answer what was given by my friend. Because, क्योंकि means because, ये அப்படின்னா, मैं अब इस तरह के उत्तरों. So, நான் இந்த மாதிரி answers கேட்டு எனக்கு பழகிடுது. आदि हो चुकी हूँ means I got used up to receive such answers often from the people. Okay. मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं. That is what I observed is that I came to a conclusion. मैं विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है. So the people who have eyes, they don't see much. वे बहुत कम देखते हैं. அவங்க கம்மியா தான் பார்க்கறாங்க. அதாவது in the sense what she wanted is she wanted to know how the world looks, how a flower looks. Very simple, a small thing only. But humans who have eyes doesn't bother about that. Okay, just like that we see that flower. Okay, very nice. That's it. One comment we give and just we move from that place. But a person who's really blind, they really wanted to know many things about that flower. How, what is the color, what is the shape of the petals, and how is it in the plant, appearing in the plant, how its bud is. Like that, they have many things to be seen. Okay.
Let's proceed. क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? So she is just asking a question to herself. क्या यह संभव है? What is it possible? संभव means possible. That in a forest, being for 1 hour, घंटा भर घूमे, ஒரு 1 ஹவருக்கு நம்ம அந்த ஃபாரஸ்ட் சுத்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட ஒரு விஷயம் கூட நம்மளுக்கு தோணலையா? விசேஷ சீஸ்னா தேக்கி, நத்திங் ஸ்பெஷல் கேன் வி see like that, because her friend answered, right, nothing special, I just went to the forest and came, that's all. So she is just asking the question, is it possible, like after roaming for 1 hour in the forest also, didn't she get any special thing to see? Okay. मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती है जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ. So she's now the author is talking about herself, that is எனக்கு मुझे जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिसे कुछ भी means I am not able to see anything, दिखाई नहीं देता, என்னால எதையுமே பார்க்க முடியல, அப்ப கூட सैकड़ों रोचक चीजें मिलती है. I can feel hundreds of, सैकड़ों means hundreds of interesting things around me. எனக்கு கண்ணு இல்ல, என்னால பார்க்க முடியல, ஆனா எனக்கே ஒரு 100 பொருட்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நான் ஃபீல் பண்றேன். எப்படி? தொட்டு பார்த்து நான் ஃபீல் பண்றேன். जिन्हें मैं छूकर means to touch. Okay, छूकर पहचान लेती हूँ. I identify the things by touching and I see many interesting things even though I don't have eyes. Okay, मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ. So now what is she? She is comparing the leaves of various trees. So here she has taken, the author has taken 2 trees. Okay, so first is the bhojpatra. Patra means leaf. Okay, panna or patra, that is called a leaf. இலைகள்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது. So bhoj tree, banquet tree னு சொல்வோம்ல, bhojpatra ke ped ki chikni chal, that is the soft bark of the bhoj tree. Okay, chickeny chal, அப்படினா அந்த branch of the tree. Chickeny means very soft, that is very very soft. And cheed ki kurdari chal, cheed means pine trees. Okay, so pine tree உடைய அந்த kurdari means rough-ஆ இருக்கக்கூடிய bark of the tree. Okay, kurdari chal means the rough bark of the pine tree. को स्पर्श से पहचान लेती हूँ. स्पर्श means I touch it. I can identify by touching these 2 trees. Okay, so I can identify how the bark is. One is very soft, one is very rough. Okay, वसंत में के दौरान में टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ. So during the वसंत season, वसंत அப்படின்னா वसंत कालम, spring season. Okay, so वसंत के दौरान means during the spring season, टहनी means again the branches of the the tree. What she is doing, I am searching for the new buds. Kojati means in search. So I am searching for the new buds in the branches of the trees when the spring season comes. Okay, मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है. I'll just go to the previous slide. So what she is telling is, मुझे फूलों, फूल means flowers, பூக்களுடைய அந்த இதழ்கள் இருக்குல்லையா, பங்குடியோ means the petals of the flowers. Okay, so that when she touches and see, it's like velvety. Okay, the velvety touch, makhmali means velvety, so soft it is. Okay, the velvety touch of the petals of the flowers.
Okay, Satak Chune. When she touches, she feels that. और उनकी घुमावदार बनावट. घुमावदार बनावट means the curly texture of the petals, curved petals. See if you have a flower, if you touch and see the petals, no, sometimes each flower will have different types of shape. That is called घुमावदार बनावट, the curved texture of those petals. When I touch all these things, महसूस करने में, I really feel very happy. आभार आनंद मिलता है. ओके, इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है. So, is dauran means when I touch and see all these things, I find that this nature, it's like a magic. Jadu apdina magic, isn't it? Jadu ka kuch ehsas. Ehsas means I understand. I feel that something magic has got. The nature has got some magic in it. இயற்கை வந்து அவ்வளவு ஒரு அழகா இருக்கிறத வந்து நான் வந்து தொட்டே வந்து உணர்றேன். அதுல கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு மாயாஜால மேஜிக் இருக்கு. கபி ஜப் மே குஷன் சீப் ஹோती हूँ. So குஷன் சீப் means sometimes when I am lucky. Okay, குஷன் சீப் அப்படின்னா நான் எனக்கு வந்து லக் இருக்கு. Sometimes when I feel lucky, तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं. So, if I get a chance, if I am lucky, sometimes when I touch the branch of a tree, டஹனி அப்படின்னா மரத்தோட கிளைய மரத்தை நான் தொட்டு பாக்குறேன். அந்த டைம்ல வந்து அந்த மரத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பேர்ட், சிடியா, a bird that which is singing with its sweet voice, madhur swar. So when I hear it in my ears, कानों में गूंजने लगते. गूंजने means it is echoing in my ears. So she is telling, see, this sound we all hear daily, isn't it? But she tells, hearing this sound when I touch the branch of the tree, I feel that I am lucky. Okay. अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ. Next what she is telling is, अंगुलियों means again it is the fingers. Okay, so இப்ப நம்ம விரலுக்கு நடுவுல, beach means in between the fingers, when she feels the flow of water, झरने के पानी को, पानी means water, so when she feels the flow of water between her fingers, महसूस means feeling, मैं आनंदित हो उठती हूँ. I really feel happy, I really enjoy that feeling, okay, of the water moving in between my fingers. मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है. That is, next she compares again the trees with some costly things. What she is telling is, मुझे चीड़ की फैली पत्तियां. Cheed means what we saw already. We saw it is the pine tree. Okay. Faili pattiya means the leaves of the pine tree that is being spread everywhere. Or घास का मैदान. मैदान means the ground which is filled with grass. घास means grass. Okay. So one is the finely spreaded leaves of the pine tree. Or when I touch and feel the grass on the ground, I feel that that is the most valuable thing in my life. So அப்ப வந்து எனக்கு महंगे कालीन से अधिक प्रिय है. महंगे कालीन means one of the costliest carpet ever. Okay, if I even walk in a costliest carpet, that is not giving me happiness. But when I walk in the grass, in a ground, I feel that much pleasure. अधिक प्रिय है. Okay, बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है. That is, बदलते हुए मौसम. मौसम means the climate or the season. You know, there is many changes. One season after the other it comes, isn't it? So बदलते ना இந்த மாதிரி மாறி மாறி வர in the seasons. Okay, मौसम का समा.
Sama means the end. So the end of the changing seasons. मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है. So it gives me, okay, the end of the changing season gives me a new color. Naya rang means new color and happiness. I am filled with happiness. Bhar jata hai. So ஒவ்வொரு காலமும் முடிஞ்சு, இப்ப மழைக்காலம் முடிஞ்சு வெயில் காலம் வரும்போது, the end of the changing season, see how and all a person who's blind is seeing this world. That is what we have to learn from this lesson. Okay, so the end of the changing season gives me a new color and I am filled with happiness. Okay, now let's proceed with next. कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है. So here मचल means we feel restless. So why does the author tell this? कभी कभी, sometimes, मेरा दिल, my heart, when I touch and see all these things, I enjoy it, it gives me happiness, but I feel restless that I wanted to see all these things. सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है. Okay, so she feels very restless that she wants to see this world with her eyes. अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने पर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मगध की heat हो जाएगा. So she's telling, இப்ப நான் இந்த பொருட்கள் எல்லாம் ஜஸ்ட் தொட்டு தான் பாக்குறேன், இதுவே எனக்கு இவ்வளவு சந்தோஷத்தை தருது அப்படின்னா என்னோட கண்களால இந்த அழகான உலகத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். That is the meaning of this line. अगर मुझे इन चीजों को, so that is these things, I just, सिर्फ அப்படின்னா just, I am touching this. छूने भर से टच பண்ணி பார்க்கிறதுனாலே எனக்கு इतनी खुशी मिलती है. I get so much of happiness. Then on seeing the beauty with my eyes, then I will really feel very happy. मेरा मन मग्न हो ही जाएगा. That's it. That is the pleasure, end of my pleasure. I will be enchanted totally to see all the beauty of the nature with my eyes. परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं. But the people who have eyes, okay, they really, truly, I am telling, they are seeing only little. बहुत कम देखते हैं. That is why this the same line we saw in the first beginning of the lesson, isn't it? People who have eyes see only less. Now you understand why she told that line? Yes. इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते. So those people who have eyes, they really don't see the beauty of the nature, okay? But people who have eyes, they really see only very little, the different beauty, okay? Samvedana, it is here, right? They don't touch their senses at all. It really doesn't reach their senses. मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता. So what she's just blaming the humans who have eyes. The मनुष्य அப்படின்னா மனிதர்கள், humans, अपनी क्षमताओं means abilities. They don't value their abilities what they have. Humans never appreciate, kadar nahi karta. They never appreciate the values what they have. அதாவது ஒரு பொருள் நம்மகிட்ட இருக்கு அப்படின்னா அதோட அருமை நமக்கு தெரியாது இல்லையா? We will not know the value of a thing which we have. If we don't have only, we will know how it is. That's what she is telling. People who have eyes see only little, but I don't have eyes. Without even having eyes, when I just touch these things, see how happy I become. If I get that eyes, then I'll be really, really enchanted. वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रखता है जो उसके पास नहीं है. So what humans do? He always looks or runs towards something that he doesn't have.
சோ அவங்கிட்ட இல்லாததை தேடி தேடி போறானே தவிர மனிதன் அவங்கிட்ட இருக்கிற பொருளை வந்துட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கிறது இல்ல. He is not appreciating the things what he has within him. He is just going behind some things which he doesn't possess. Okay, यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं. I'll stop till here. यह कितनी दुख, she tells at the finally at the end of the lesson, இது எவ்வளவு சங்கடப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம். It is very sad for me that திருஷ்டி அப்படின்னா கண்ணுல பாக்குறது, the vision, the sight, it is such a blessing for the people. ஆசீர்வாத், லோகுக்கே ஆசீர்வாத். So it is really a blessing for the people. But people who have eyes take it as a simple thing. एक साधारण सी चीज समझते हैं. They just take it for granted, simple thing. जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है. You know, with that eyes. So again, niyamat se means with that blessing, with the gift what we have. What is that gift? The sight, the vision is the gift for the humans. She's telling, if I had the vision, or the people who is having the vision, that gift, with that gift, we can fill our life with happiness. Not just happiness. How is the happiness? She's comparing the happiness with Indradhanushi Rangom. That means what? Rainbow colors, colorfully. Okay, say hara bara kiya ja sakta hai. Hara bara kiya means your life can be entirely filled up with all the rainbow colors, and we really can have this blessing. So she is ending the lesson by telling it is a blessing or a gift to have a sight. Okay, so this is the end of this lesson. It is written by Helen Keller. Hope you all know who is Helen Keller, right? You can read her autobiographies in the internet also. Clear? Now let us learn about the author. लेखिका के बारे में. Helen Keller. So the author's name is Helen Keller. The period of her lifetime 1880 से 1968 तक अमेरिका. एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा. So even in the midst of the darkness, she was taking up lamp, light. रोशनी அப்படின்னா அந்த வெளிச்சத்தை கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो, न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे. Let's stop till here. So just imagine, okay, कल्पना करो means just imagine if a person is not able to hear. ना सुन means they cannot hear, ना देख सकता, they cannot see. Okay, but still फिर भी they are trying to write and read, लिखना और पढ़ना और बोलना सीख ले. They are learning to speak. Okay, सीख means they are learning. भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे. So they are thriving to live a life with great anxieties and wishes. आशा, நிறைய ஆசைகளோட அவங்க வாழ்க்கையை வந்து தொடங்குறாங்க. और उसके योगदान दुनिया के लिए यदाघार बन जाए, and they really become a living examples in this world. ऐसी थी हेलन केलर. Like that one person was Helen Keller. जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही. What happened when she was very young? बचपन சின்ன வயசா இருக்கும் போதே வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய பீமாரி அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஹை ஃபீவர், உடம்பு சரியில்லாம போச்சு. ஸோ அந்த காரணத்தினால she was not able to see and also she was not able to hear. सुनने, காதும் கேட்காம போயிடுது, அந்த சக்தி அவங்க இழந்துட்டாங்க. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, but she didn't accept that defeat in her.
So what happened? College के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा. So she thrived a lot till college she learned. So in the college days itself, she started writing her autobiography. Atmakatha means autobiography. Story of life. That book name is Story of Life. में वे लिखती है. So what she is writing in that is, मुझे ये तो याद नहीं. So I don't remember that. ऐसा कैसे हुआ? How such thing happened? लेकिन ऐसा लगता था कि, but I feel that रात कभी खत्म क्यों नहीं होती? This night, रात அப்படினா night ஏன் வந்து எண்டே ஆக மாட்டேங்குது? Why doesn't the night end? Because she is in darkness, she cannot see. That's why she is telling like this. और सुबह क्यों नहीं आती? Why morning doesn't come at all? I don't know. Like that she told. दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं. And you know her autobiography, that book has been translated. अनुवाद means translated in many languages in the world. Okay. इसके अलावा, so apart from that, अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें, she has written more than 10 books, और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुई, more than hundreds of writings, stories, many motivational speeches she has written and it has been published. उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया. So what she didn't stop within that. So she started roaming to each and every country. दुनिया भर, she went worldwide and she inspired the people like her and विश्व शांति के लिए काम किया. For the world peace, she worked for world peace. Helen Keller भारत भी आई थी. You know, Helen Keller has come to India also. This is all about our author. Now let us go to our book back exercises. प्रश्न अभ्यास. Under that निबंध से फर्स्ट क्वेश्चन, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं. हेलन केलर को ऐसे क्यों लगता है? Why Helen Keller feel that people who have eyes, okay, they really see very little. Why did she feel like that? So the answer, Helen Keller ने ऐसा इसलिए कहा, she told like this because, क्योंकि जो लोग किसी चीज को निरंतर देखने की आदी हो जाते हैं वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते. So those people, वे लोग means those people, if they see whatever they see around, the things they see around, they just take it for granted. निरंतर देखने की आदी हो जाते हैं. Always they see, everything they see. So they are not focusing on what special it is. वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते. उनकी तरफ means like Helen Keller, they don't notice it. Okay, because she touches the pine trees and tells how rough it is. She touches the birch tree and tells how soft it is, how the petals of the flowers are. Many things she observes even though she doesn't have eyes to look at it. Okay, so उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती. So the Helen tells that people who have eyes in their heart, they don't have the feeling of speciality about the things what they see around. वस्तु की प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती. Okay. सेकेंड क्वेश्चन, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? सो देयर वाज दिस वर्ड्स इन द लेसन. प्रकृति का जादू மீன்ஸ் மேஜிக், द மேஜிக் ஆஃப் द நேச்சர் அப்படின்னு ஒரு லைன் பார்த்தோம் இல்லையா? சோ எதை வந்து ஆத்தர் வந்து மேஜிக் அப்படின்னு சொல்றாங்க? प्रकृति का जादू वह है. सो द मैजिक ऑफ नेचर इज दैट जो प्रकृति के रूप में नित्य कुछ न कुछ परिवर्तन करता है. So it takes the form of the nature in which we see somehow or the other changes. परिवर्तन means changes.
प्रकृति अपने रूप के आकर्षण से हमें अपनी ओर जादू की तरह आकर्षित करती है. So our mother nature, okay, so it has got various forms like mountains, hills, flowers, butterflies, whatever you can tell, okay. आकर्षण से, so because of its attractive nature, हमें अपनी ओर जादू की तरह, like a magician, like magic, she attracts the nature, mother nature attracts everyone towards it, okay, करती है. प्रकृति में विविधता है. So विविधता means diversities are there present in the nature. अलग अलग वृक्षों की अलग अलग घुमावदार बनावट, that is different trees, vriksho means trees, have their different texture. Gumavadar banavat means, I said, some trees will be straight like coconut trees, some trees will be like branchy, like the neem trees, and some trees will be like they will have roots falling from the top, isn't it? So each tree has its own texture. और उनके छाल means the branch, the bark of the tree, और उनकी छाल और पत्तियां होना, the leaves present in those trees. Every tree leaves will be different, isn't it? You can see neem tree how the leaves will be, a banyan tree how the leaf is, isn't it? So फूलों का खिलना, how the flower blossoms, खिलना means it blossoms. कलियों की पंखुड़ियां की मखमली सतह, कलियों means buds, पंखुड़ियां means the petals. So the petals of the buds, when you touch and see, it feels very velvety. मखमली सतह means velvety. Okay, बागों में पेड़ों पर गाते पक्षी. So the singing birds, गाते पक्षी means the singing birds of the garden. கார்டன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மரத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பாடுற பறவைகள், இது எல்லாத்தையும் தான் அவங்க வந்து இயற்கையோட மேஜிக் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் third question. कुछ खास तो नहीं, nothing is special in it. This is the meaning of this line. हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया? So one of Helen's friend gave this answer. At what situation did she give the answer to Helen? और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? And on hearing that, why Helen didn't feel surprised? ஆச்சரிய क्यों नहीं हुआ? அது கேட்டா அவங்க ஒண்ணுமே சர்ப்ரைஸே ஃபீல் பண்ணல இல்லையா? So you have to write the situation. So let's write. प्रकृति में चारों ओर देखने और समझने की बहुत सी चीज है. So प्रकृति में இந்த இயற்கையில வந்து நாலா பக்கமும் பார்க்கிறதுக்கும் அது பத்தி விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நிறையவே வந்து பொருட்கள் இருக்கு. बहुत सी चीज, a lot of things are there around our mother nature to see and enjoy it. But still, फिर भी அப்படின்னா but still, उनकी मित्र कह रही है कि, her friend was telling that, मैंने कुछ खास नहीं देखा, I didn't see anything special. Okay, खास அப்படின்னா special, but she told that she went to a forest and came back, right? So she said nothing special I saw in the forest. Okay, लेखिका का मानना है कि, so the author also accepts that and tells that, वे कुछ भी देखना ही नहीं चाहती, वे उन चीजों की चाह जरूर करती है जो उनके आसपास नहीं है. So वे कुछ भी देखना ही नहीं चाहती, she doesn't want to see anything. वे उन चीजों की चाह जरूर करती है जो उनके आसपास नहीं. That is, the things people know, what is the mentality of people? We always go behind some things which we don't have. Okay, उनके पास आसपास नहीं, those things we go in search, but we do not value the things what we see in front of us. Clear? That is the meaning of this sentence. Okay. Fourth question. हेलन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती है? पाठ के आधार पर इसका उत्तर दी. पाठ के आधार means based on the lesson you have to answer for this question. The question goes like that. हेलन केलर प्रकृति की
किन चीजों को छूकर, छूकर means touching. What are the things Helen Keller is touching in the Mother Earth, Mother Nature, and what are the things she is hearing and feeling about? Okay, so எதை வந்து தொட்டு பாக்குறாங்க, எதை காதால கேக்குறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம based on the lesson நம்ம எழுத போறோம். हेलन केलर प्रकृति की अनेक चीजों जैसे भोजपत्र पेड़ की चिकनी चाल, चीड़ की खुरदरी छाल, टहनियों में नई कलियों फूलों की पंखुड़ियों की बनावट को छूकर और संग कर पहचान लेती है. That is, ஹெலன் கெல்லர் பிரகிருதிக்கே அந்த இயற்கையில இருக்கக்கூடிய நிறைய பொருட்கள், अनेक चीजों में many things such as, one by one we'll say. First one is bhojpatra, the bhoj tree, the banquet tree. The bark of the tree will be very very soft. Chikni chal, chal அப்படினா bark of the tree, அது வந்து chikni means it is so very soft. She is observing that. Same time she can see cheed ki, cheed means the pine tree. So second one is pine tree. The bark of the pine tree is very rough. Kurdari chal, kurdari means rough, chal means bark. Okay, and the next thing is टहनियों में, टहनी means branches. In the branches the newly blossomed flowers. नई कलियों, कली means buds. So the buds are blooming into flowers. So when it is changing into flowers, the petals of the flowers, पंखुड़ी அப்படினா petals. Okay, बनावट means the texture. She is just touching the petals of the flowers and feeling the texture of the flowers, so soft, so velvety, by touching, छूकर. और संग कर पहचान लेती है. Okay, so टहनी में नई कलियां, this is number 3, you can name. So all these things she touches and feels and tells it. Okay, you can even list it in points and write, that will also be good. Okay, फिफ्थ क्वेश्चन, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है. दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ द लेसन वी हैव सीन. तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ है? सो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? लेट अस फर्स्ट रीड द स्टेटमेंट अगेन, देन गो टू द आंसर पार्ट. जबकि इस नियामत से, नियामत मीन्स ब्लेसिंग और गिफ्ट. What is the gift she is telling about? Sight, the vision, the கண் பார்வை இருக்கு இல்லையா, நம்ம பார்க்க முடியறது, அதுவே வந்து நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய gift, life ஓட gift. Okay, जिंदगी को खुशियों से, we can fill our life with happiness, not just simple happiness, it is with the rainbow colored. Okay, इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है. So what is the meaning of this? Let us read this. हमारी आंखें अनमोल होती है. So our eyes, आंखें means eyes, अनमोल means very precious, isn't it? Just close your eyes for 2 minutes and see how do you feel. Yes, you will feel okay, but if it continues, if without your eyes, can you live? Can our life exist? Because we are used to of our life eyes, isn't it? So that's why we say eyes are very precious. Okay, अनमोल होती है, most valuable thing. Clear? संसार की सारी खूबसूरती आंखों से ही है. So सारी खूबसूरती அந்த இயற்கையிலே வெச்சு, संसार means the nature, இந்த உலகத்திலேயே வெச்சு மிக அழகான ஒரு பொருள் எது அப்படின்னா அது நம்மளுடைய கண்கள் தான். It is our eyes which is the most beautiful thing of the entire world. जीवन के सभी रंग आंखों से ही है. So जीवन के सभी रंग, all the colors of our life, it is through our eyes only. It is the eyes. Okay, अतः यह जिंदगी की बहुत बड़ी देन है. So it is the biggest gift, blessing of the Lord for our life. इसमें जिंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को बुलाया जा सकता है. So with the help of your eyes, as you see,
You can make your life colorful. Okay, जिंदगी को रंगीन और खुशहाल, you can make your life filled with happiness. Okay, बनाया जा सकता है और अपने सारे दुख means sorrows को बुलाया means भूल जाना, to forget. You can forget all your sorrows when you have eyes and see the beautiful creations of Mother Nature. Okay, निबंध से आगे, that is this is a value based question. आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना, मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करें. That is, you are going to school. When you are returning from the school, on the way you will be seeing many things and you will be hearing many things. Okay, so you can take it as a group activity and discuss with your friends. Okay, next question is, कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती है? इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ. So what is the use of our कान? कान means ears, to hear, isn't it? So if you are not able to hear, just an imagination, if we are not able to hear, how will the world appear to you? You have to write a tippani on that and you have to read it in the classroom. Okay, so let us write the tippani. कान से न सुन पाने पर, if you are not able to hear with our ears, दुनिया बड़ी विचित्र लगती है. The entire world, உலகமே வந்து நமக்கு ஒரு ரொம்ப விசித்திரமான ஒரு பொருளா தெரியும் இல்லையா? Totally different it will be. आंखें तो सब कुछ देखती है. You know, the eyes can see everything what is happening around. पर जब उन क्रियाकलापों की आवाज नहीं सुन पाते, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो बंद कानों से हम मूक फिल्मों की तरह देखते हैं. That is, actually the eyes can see everything. Okay, but जब उन क्रियाकलापों की आवाज नहीं सुन पाते, when you are not able to receive the sound, आवाज means the sound, you are not able to hear. क्रियाकलापों means the creations, whatever you see around, the birds, tweeting of the birds, or water falling from a waterfalls. You can take any example. Even in your home, if someone is speaking, if you are not able to hear, it will be unique, isn't it? Different. तब ऐसा प्रतीत होता है, then it will be like we are seeing a mute film. Okay, बंद कानों से हम, बंद कानों அப்படினா காதை மூடிட்டு காது கேட்காதவங்களோட அந்த மூக் film அப்படினா வந்து சைலண்ட் மூவி பார்க்குற மாதிரி நமக்கு இருக்கும் இல்லையா? न सुनने के कारण, सो काद केकाद कारणத்தினால व्यक्ति दूसरों से अपने विचारों का आदान प्रदान सही रूप में नहीं कर पाता. That is, a person, he cannot communicate with the others. दूसरों से अपने विचार means his own thoughts, he will not be able to communicate in the correct way if you are not able to hear when the others tell something to you. Okay, next case is, तुम्हें किसी ऐसी व्यक्ति से मिलने का मौका मिलते जिसे दिखाई न देता तो तुम उससे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीजों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो, लिखो. So now you are going to write few questions. You will be asking to a person. If you have a chance to see a person like he is not able to see. Okay, जिसे दिखाई न देता, दिखाई அப்படினா பார்க்க முடியாத blind persons பாத்தீங்கன்னா how do they hear, touch and feel everything, you can ask them. Okay, so you have to write few questions here. So now let us start. उनके अनुभव जानने के लिए, to share their experience with that, we can write the following questions. निम्नलिखित प्रश्न कर सकते हैं. Number 1, किसी भी ध्वनि को सुनकर वे कैसे अनुमान लगाते हैं कि ध्वनि किसकी है?
Dhvani means the sound. So usually the blind persons, they recognize everything by touching and by hearing the sound, isn't it? So किसी भी ध्वनि எந்த ஒரு சத்தம் கேட்டாலும் सुनकर அவங்களுக்கு அது எப்படி ஃபீல் ஆகும்? कैसे अनुमान लगाते हैं कि ध्वनि किसकी है? இப்ப வந்து ஒரு பறவை கத்துச்சு அப்படின்னா இது இந்த பறவை அப்படின்னு அவங்க எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க? Like that you can ask them. Second question is किसी भी चीज को चक्कर वे क्या है? चक्कर वे क्या है और कैसे अनुभव करते हैं? So here chakkar means taste. So when they taste something, how is their feeling? That you can ask them. Next one is क्या आप पक्षी की आवाज को सुनकर उसका नाम बता सकते हैं? So if you can hear the sound of the birds, पक्षी means bird, आवाज means sound. को सुनकर means to hear. அப்ப எந்த பறவையோட சத்தம் கேட்டா அந்த பறவை என்ன, அதோட பேர் என்னன்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா? And how do you relate it? यह कैसे संभव हो पाता? How is it possible to you to keep in mind? Because they haven't seen a crow or a pigeon or a parrot, but they should be able to differentiate and identify the sounds of different birds, isn't it? So how do they do? Okay. Next one is क्या आप सूंघ कर बता सकते हैं कि यह कौन सा फूल है? So it should be su here, okay? Soongkar அப்படினா முகர்ந்து பார்க்கிறது, by the smell. Okay, we have 5 sensory organs, isn't it? So with that, they cannot see, but they can hear, they can touch, they can taste, and they can smell. So through the smell, they can tell what type of flower it is. यह कौन सा फूल है? Okay? सूंघकर, again spelling mistake here, it should be like this. सूंघकर अच्छी बुरी चीज का अंदाजा किस हद तक लग पाता है? So by smelling, can you find out, identify the good things, the bad things? How do they differentiate it? Like this, you can ask questions with them. Okay. So next is हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आंखों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं. As I said, with those 5 sensory organs what we have, the maximum utilization is for the eyes what we do. Okay. ऐसे चीजों से एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो. So let us make out a talika. Talika means a chart out. So what and all sensory organs you use for what? Like for hearing. காது கேக்குது அப்படின்னா அதை வச்சு நீங்க எதெல்லாம் கேட்பீங்க? If you are touching means what and all you will feel out of this. If you are tasting and if you are smelling, like that. Okay. So here sunkar means to hear, chakkar means to taste. Okay. Soongkar means to smell. Okay, to smell. Chukar means to touch. Okay. So இப்ப அந்த tabulation பார்க்கலாம். First let us see to hear. सुनकर அப்படினா நம்ம எதெல்லாம் பார்க்கலாம் கேட்கலாம் அப்படினா कोयल का मधुर स्वर, the sweetest स्वर அப்படினா आवाज, the sound of the cuckoo bird. Okay. कौवे की कर्कश आवाज, காக்காவோட அந்த கர்கஷ் சவுண்ட். கர்கஷ் அப்படின்னா அது ரொம்ப இனிமையா இருக்காது இல்லையா காக்கா கத்துறது. அப்புறம் மா கி நாராஸ்கி பரி புகார். சோ அம்மா வந்துட்டு sometimes when she wanted to make us study, how does she call us? சோ அம்மாவோட அந்த கூப்பிடுறப்ப வந்து அந்த சத்தம் பாசமா கூப்பிடுறாங்களா, கோவத்துல இருக்காங்களா, அந்த மாதிரி நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இல்லையா. நெக்ஸ்ட் கீத் சுன்கர், गायक की पहचान. On hearing the song, you can identify the singer who sings the song, isn't it? So all these with the help of hearing. Okay. Next, chakkar. Chakkar means the taste. So in taste, if you consider, there are many tastes, isn't it? Seb means apple or aam means mango. Ki mithas. Mithas means these all taste sweet, isn't it? Achar ki
katas. Achar means pickle. So ஊறுகாய் எப்போதுமே கொஞ்சம் காரசாரமா இருக்கும். அதான் வந்து katas, spiciness. And மிர்ச்சுக்கா தீகாப்பன். So மிர்ச்சி அந்த பச்சை மிளகா வரமிளகா எல்லாம் வந்து நம்ம வாயில வச்சுட்டா you know how burning it will be. Like, right? Next, imali ka chatpata swad. Imali means tamarind. So puliya or one small piece of tamarind, when you take and keep it in your tongue, see how it tastes. Okay, that is chatpata swad. Swadish bhojan. So if you have such a tasty food, okay, kadvi dawa. Dawa means medicine. So kadvi means the bitter medicine when you taste it in your tongue. So how do we feel? So all these through our taste buds. Okay. Next is sungkar. Sungkar means smell, okay, through your nose. So fulon ka gandh, the fragrance or the smell of the flowers. Okay. Pak rahe bhojan ka gandh. So when your mama is cooking in the kitchen, pak means to cook. That the smell of that you'll identify whether it is biryani or something like that. Your favorite dishes, isn't it? Gas ka risav. So gas smell. Risav means the smell of the gas or any other thing, whichever through which you identify particularly what is that smell. Okay, and next is chukar. Chukar means through touch and feel. So first one is baraf ki tand. The tand appadina the chillen irukku. Baraf appadina snow. So snow or panikatti ella edutittingna adu thotta ungalku eppadi irukum illaya. So you feel the coldness, right? Aag ki garmi. So நெருப்பு கிட்ட போனா எப்படி இருக்கும்? The hot heat of the fire near you. Kapde ke prakar ki jankari. That is the type of the dress we wear. If it is cotton or woolen or nylon, like that. You can touch and see and feel. Sharir ka tapman. That is the temperature of the body. So we touch and see whether you have fever or it is a normal body temperature. Like that. Okay. Next, let us go to Bhasha ki baat. So under that part में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं. So there are many words related to स्पर्श. स्पर्श means touch and feel. नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं. बताओ कि किन चीजों का स्पर्श ऐसा होता है. So here down they have given many words. We have to tell what it is. Okay. So let's start. Chikna. So chikna means like sticky. So which will be sticky? For example, oil. Yes. So tail means oil. Ghee means the neyi solrom illaya, neyi. Cream mein chiknapan hona. Cream. So in creams you have that type of texture. You have this chikna. Okay, soft, very soft textures and present in the oil, ghees and creams. Like that we can write it down. Next one, the mulayam. So mulayam appadina vandu reshmi kappada. So when we touch the silk, reshmi means silk cloth. How do you feel? So soft it is, right? Like that you can write. Next, kurdara. Kurdara means rough. So lakdi means wood. Lakdi wa chal kurdare hote hain. Mostly the bark of the trees will be very rough, isn't it? You can write your own examples here. Okay. Next is sakht. Sakht means very hard. Like loha means iron. Pattar means stones. Lakdi means wood. Apdi hard ah irukla thottu paakumbodhe. Next வந்து சிப்சிப்பா. சிப்சிப்பா அப்படின்னா வந்து பிசு பிசுன்னு இருக்கிறது. அப்ப அந்த கம் சொல்லலாம். You can tell கோந்த். கோந்த் அப்படின்னா கம். It will be very sticky in nature. Next புர்புரா. புர்புரா அப்படின்னா ரேத் புர்புரா होता है. ரேத் அப்படின்னா மணல். ஓகே, ரேத் அப்படின்னா அந்த பீச்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சாண்ட் எல்லாம் சொல்றோம்ல, அது மாதிரி பொறன்னு இருக்கும் இல்லையா? That is called புர்புரா होता है. Like that. Next,
अगर मुझे इन चीजों को छूने पर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मग्न हो जाएगा. This is the sentence from the lesson. Helen Keller told that, see, if I am getting a chance just to touch and feel these things, in that itself I really feel the happiness. If I have the eyes to see those beauty, then I will really be enchanted totally. That is the meaning of the sentence. Now, ऊपर रेखांकित संज्ञाएं क्रमश, that is they have underlined a few words. Can you see? खुशी, सुंदरता. Yes. किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही है. So खुशी means happiness, सुंदरता means beauty. So it is describing, isn't it? Describing words of a feeling, or some happiness is a feeling, beauty is again a feeling, isn't it? So ऐसी संज्ञाएं, such nouns are called abstract nouns. भाववाचक कहलाती है. भाववाचक means it's called abstract. Okay? गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है. So generally these abstract nouns, it will be based on such things. That is, abstract nouns cannot be seen like the other nouns, common nouns, proper nouns. அப்படினா நமக்கு definition தெரியும் இல்லையா? But abstract noun, it is a feeling, isn't it? Happiness is a feeling that you cannot see, like that. Okay, so भाववाचक संज्ञा की पहचान, so to identify an abstract noun, यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं. That is what is again told. सिर्फ महसूस, just we can feel the abstract nouns, but we cannot show this is abstract noun. Like that, if it is a chair, what is a chair? Chair is a common noun, you can show it. But childhood, that is an abstract noun. You cannot show the childhoodness. You can show a child, but you cannot show the childhood. Okay. Where are we? Okay. छूकर या छू नहीं सकते, that is you cannot see or you cannot touch or feel the abstract nouns. आगे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो. So many of the abstract nouns are written here. We have to read and understand. इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने. So these abstract nouns are, some are noun forms and some are taken verb forms. क्रिया means verb. Okay. संज्ञा means noun. उन्हें भी पहचान कर लिखो. So we have to identify whether that word is a noun or a verb. Okay. So here in the boxes it is given. Let us read this ahead. भाववाचक संज्ञा, मूल शब्द, whether it is a noun or a adjective or a kriya. It is a verb. Okay. Sanjna means noun. Okay. Visheshan means adjective and kriya means verb. Let's see few of them. Mithas. So mithas means sweetness. So the mool shabd அப்படினா அதோட original form, mool ரூபன் சொல்றோம் இல்லையா, அது வந்து மீட்டா. மீட்டானா sweet. So it is a adjective. Visheshan means adjective. Okay, like that. Let us see here. Book. Booka அப்படினா hungry. Book அப்படினாலும் hunger தான். Hungerன்னு சொல்றோம்ல. Hunger, hungry. Again it is an adjective. Visheshan. Shanti. Shant. Shanti அப்படினா வந்துட்டு politeness சொல்வோம். Shant அப்படினா polite. Okay, again it is an Visheshan, adjective. Bolapan. Bola அப்படினா innocent. Bolapan அப்படினா innocence. Okay, so அது ஒரு adjective, again Visheshan. அதே மாதிரி budapa, buda means old. budapa அப்படினா old age. இப்ப childhood மாதிரி oldhood, elderlyhood, அதுதான் budapaன்னு சொல்லுவோம். So I'll write it here. All these are abstract nouns, A, B. Okay, so again that is also a Visheshan, adjective. All these mool shabdukku தான் இங்க நம்ம எழுதுறோம். Okay, next gabrahat, gabrana அப்படினா பயப்படுத்துறது.
Okay, fear. This is fearful, gabrahat. So it is a action. So it is a verb. Kriya means verb. Okay. அதே மாதிரி பஹாவ் பஹ்னா. பஹ்னா அப்படின்னா வந்து flow ஆகிறது. The river flows அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. So it is again an action word. So again it is kriya. Next furti. Furtila. So furti means agility. குவிக்கா இருக்கிறது, குவிக்னஸ் சொல்லுவோம். அப்ப ஃபுர்த்திலாங்கிறது குவிக் ஆர் அஜைல். ஓகே, சோ தட் இஸ் a விசேஷன், இட் இஸ் an adjective. நெக்ஸ்ட் தாஸ்கி, ஃப்ரெஷ்னஸ். தாசா அப்படின்னா ஃப்ரெஷ். சோ அகைன் இட் இஸ் a விசேஷன், adjective. மஸ்தூரி, மஸ்தூர். So mazduri means wage, worker. Mazdoor means worker, so it is a noun. Okay. Sanya. Next, ehsas. Ehsas, same thing here. Ehsas means realization. That is called ehsas. So here both ways it is ehsas only. It is a visation. Okay. Next, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ. So this is the line from the lesson, isn't it? So it states that நான் வந்து இந்த மாதிரி பதில்களை கேட்டு எனக்கு வந்து I'm used to it. Adi means I'm used to hearing such type of answers. Next line, उस बगीचे में आम, आमलतास, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ है. So there are many different types of trees like mango trees like that in the garden. Here also you have that word adi. Okay. ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में, so in both the sentences given above, let us consider this as 1 and this as 2. Sentence number 2, रेखांकित शब्द. रेखांकित means the underlined word, what I am circled here. Okay. देखने में मिलते जुलते हैं. So on seeing that, see what is this word adi. This word is adi. Just one difference only in this word. இது வந்து ஈ மாத்ரால இருக்கு, இது வந்து ஈ மாத்ரால இருக்கு, அவ்வளவுதான் இல்லையா. पर उनके अर्थ भिन्न है, but their meaning is entirely different. Okay. So नीचे एक ऐसे कुछ और शब्द दिए हैं. So here there are few words given below like that. वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो. So we have to make sentences and make the meaning clear. Okay. So let us start one by one. Avadi. Avadi. Okay. First avadi पाकलाम. यह प्रश्न पत्र पूरा करने की अवधि 3 घंटे है. To finish this question paper, the time given is 3 hours. Okay, so the time given is 3 hours. Avadhi 3 घंटे है. If it is avadhi, it means अवध क्षेत्र में अवधी भाषा बोली जाती है. So Avadi language, it is the name of a language. Avadi language is spoken in the Awadh region. Okay, kshetra means region. Now this is me and this is my. Okay, so Suman se meri mulaqat बगीचे में हुई. So that is I met Suman. முலாகாத் அப்படின்னா மீட்டிங். நான் வந்து சுமனை வந்து கார்டன்ல மீட் பண்ணினேன். I met Suman in the garden. In the garden சொல்றோம்ல, அப்ப மே வந்து in அப்படிங்கிற மீனிங் கொடுக்குது. அதே மை அப்படின்னா மை தில்லி கா நிவாசி ஹூ. I am a resident of Delhi. I reside in Delhi. நிவாசி அப்படின்னா நான் டெல்லியில இருக்கேன். ஓகே. I அப்படின்னா மே, இந்த ஐ சொல்றோம்ல அதுதான். ஓகே. இப்ப இது வந்து மேல், இது வந்து மைல்னு சொல்றோம். சோ மேல்னா என்னன்னு பார்க்கலாமா. मित्रों को आपस में मेल से रहना चाहिए. So it means what? मित्रों அப்படின்னா friends இல்லையா. Friends should live together. மேல் से रहना ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கணும். அதே மைல் அப்படின்னா इस साबुन से कपड़े में मैल नहीं रहेगी. मैल அப்படினா அழுக்கு. சோ இந்த சாபுன், இந்த சோப்ல இந்த துணியை துவைச்சோம் அப்படினா அதுல இருக்க அழுக்கெல்லாம் போய்டும். The dust will go away from the dress when you use this soap. சாபுன் அப்படினா soap. Okay. Next, இது வந்து ஓர், இது வந்து அவுர் இல்லையா. ரெண்டு, இங்க ஒத்த கொம்பு இருக்கு, இங்க ரெட்டை கொம்பு இருக்குல்ல.
यह रास्ता मेरे घर की ओर जाता है. So in the vali, रास्ता means this way takes to my home. घर की ओर என்னோட வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போகும். அப்ப அந்த ஓர் வந்து towards. This path goes towards my home. அதே और அப்படின்னா ராம் और श्याम பாய் है. So ராம் and श्याम are brothers. இது வந்து और அப்படின்னா and and சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மீனிங்க கொடுக்கும். ஓகே, இப்ப தின்னு ஒரு வேர்ட் இருக்கு, தீன்னு ஒரு வேர்ட் இருக்கு. அப்ப பார்க்கலாமா? आज दिन बड़ा सुहाना है. So today's day is very pleasant. बड़ा सुहाना ரொம்ப நல்லா இருக்கு, பிளசண்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். दिन அப்படின்னா day, day day சொல்றோம்ல. Hope you are familiar. So that is day. दीन, दीन அப்படின்னா வந்து poor people. हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए. So ஏழை மக்களுக்கு, दीन दुखियों for the poor people we have to help them. सहायता करनी चाहिए. सहायता means help. Okay. Next सिल, शील. सिल அப்படின்னா माँ सिल पर मसाला पीस रही है. So the mother, amma na amma இல்லையா? So the mother is grinding. पीस रही है means she is grinding the spice. Masala அப்படின்னா spice on the cob. Okay. So sil means cob here. So शील, शील அப்படின்னா शील स्वभाव के लोग सबको अच्छे लगते हैं. ஷீல் அப்படின்னா சாந்த ஸ்வபாவமா இருக்கக்கூடிய மக்களை எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும். सबको अच्छे लगते हैं. Everybody likes people who are very polite. Okay, clear? Next, अनुमान और कल्पना. So under that, first question, इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नजर कहाँ जाती है? तस्वीर means picture. Can you see a picture? It is in your textbook. So just by looking onto this picture, what is the first sight? உங்க கண்ணு வந்து எங்க பாக்குது? Just you can write if you're watching the street or the building or the trees or the sky over here. Anything if you want. Okay, it's your own. Anuman or kalpana means your creative thinking answer only. Okay, so what I have written is tasveer mein meri pehli nazar. So the first sight what I saw in this picture is asman se aa rahi roshni. Roshni means the brightness that comes from the sky. Can you see here? Yes. की तरफ जाती है. And what are the things you can observe in this picture? One man is coming in the scooter putting a helmet. One man is walking there. Some cycles are there and few persons are standing towards the shop. This side when you see auto rickshaws are there and many vehicles are there. It is a street view. Okay. Now let's go to the second question. Gali means street. Okay. Gali mein kya kya cheezein hain? That's it. Whatever you saw in the street, you have to write it down. That's all. So let's write like this. Gali mein ek scooter par baitha aadmi. So there is a scooter in which a man is sitting. और साइकिल लेकर खड़ा व्यक्ति. Cycle, in a cycle one man is standing. खड़ा means he is standing with his cycle. व्यक्ति means person. दिखाई दे रहा है. You can see that. गली के एक ओर, towards one side of the street there are few shops. कुछ दुकानें हैं. दुकान means shops. दुकान की तरफ मुख करके एक व्यक्ति खड़ा है. व्यक्ति means one person. खड़ा means he is standing facing towards the shop. Okay. गली की दूसरी ओर, the other side of the street, you can see many vehicles where there isn't it. कुछ साइकिलें और मोटरसाइकिल खड़ी है. And you saw an auto, isn't it? So एक ऑटो रिक्शा भी खड़ा है. Like that you can just write what you observe. Clear? Going to the third question, इस गली में हमें कौन कौन सी आवाजें सुनाई देती है? So in the street, what are all the sounds you can hear? That is the question. That you have to classify based on the time. That is, subah ke waqt means morning time, sham ke waqt means evening time, dopahar means afternoon time, raat means night time. Okay, so take one and write. So subah ke waqt, in the morning time, what sounds you can hear from the street?
गली में साइकिल की घंटियां. So the cycle people who are going in cycle, they may give a bell, cycle bell sound. Scooter pora satham kekum, auto rickshaw sounds, and morning time, milkman will come and give you milk. That time he will have one sound, isn't it? Doodh wale ki dhwaniya. Dhwani means sound. So nayi deti hogi. So like that you can write. And in the afternoon time, dopahar means afternoon. Okay. So dopahar ke waqt tele walon aur kabadi walon. Tele walo means tallu vandikaranga solluvom illaya. People used to take and come fruits, vegetables in the shop, not in the shop, with their vehicle on the road. Those people are called tele walo. Kabadi walo means the person who collects the waste, like old newspapers in our homes, like that, plastic things and all. So they are called kabadi walo. Tata means as well as school ke वापस आते बच्चे. So mostly afternoon times by 3 o'clock you can find children coming back from the school, isn't it? वापस means coming back. बच्चों की आवाज आती है. You can hear these sounds. Okay, in the afternoon time. Now in the evening time, शाम के वक्त, evening time, cycle की घंटियां, again you can hear the bell of the cycles, and if the vehicles are moving, the sounds of the vehicles, वाहनों का शोर, बच्चों के खेलने की आवाज, and children will be playing, isn't it? So the खेलने means playing, the sound of the children playing in the street, and और लोगों की बातचीत की आवाज. So you can just hear people talking among themselves. बातचीत की आवाज आदि भी आती है. Okay, and in the night time, how will be the street sound? Will be a bit less, isn't it? So रात के वक्त आते जाते लोगों के कदमों की आवाज. So if it is night time, mostly vehicles will not come, so you can hear people walking and going here and there. And if it is going to be late night, then you can hear the sound of barking dogs, isn't it? कुत्तों के बाउंगने की आवाज. बाउंगने means barking. और पुलिस गाड़ी की siren. Sometimes police will be roaming here and there to check how is the situation in the street. So police गाड़ी, the vehicle, police vehicle siren sound you can hear. आवाज आती होगी. Like that you can write it down. Okay. You can write your own answer by observing this particular street. If they are giving a national highway means, then accordingly you should write that. Okay. This, I'll just go back to the picture. This is a very small street, not very big state highway or something like that, isn't it? So mostly people who are having houses here and maybe some offices or schools, only those people will be crossing this road, using this road especially. Okay, and people who want to come to this shops will come. Okay, so based on that you can write your own answers. Clear? Now the next question, अलग अलग समय में ये गली कैसे बदलती होगी? So the street is the same, but in different times we can see the view of the street to be changing. Morning la irukra madri madhyana irukradilla illaya, because morning you can see people hurriedly using their cycles and scooters and going to schools and offices and so on. But maybe in the around 11 o'clock, 12 o'clock, the street will be very free, a bit free. Again, the traffic may be high during the evening time. So the street has got some changes based on the timings, isn't it? Why is it so? So that is what, अलग अलग समय में गली तो वही रहती होगी. So the street remains the same there only, बस वहाँ आने जाने और रुकने वाले लोग बदलते होंगे. But what happens? The people who come in here or the people who stop for the shops only changes, isn't it? So maybe if you want to go to shop, maybe once in a week you go to that street, to that shop, like that. If your house is there in that street, then you will be using that road frequently, like that. सुबह और शाम के समय, so morning and evening time
times वहाँ हलचल रहती होगी. हलचल means you அந்த பரபரன்னு அந்த சத்தம் கேட்கும். Because people will be using the streets, roads. Whereas तथा दोपहर और शाम में during the afternoon times, untimely times, right? So दोपहर और शाम में शांति छाई रहती होगी. It will be remaining silent. Maybe 1 or 2 persons will be there. That's it. Like that. Okay. So fifth question. ये तारें गली को कहाँ कहाँ ले जोड़ती होगी? You can find many wires. तारे means wires in the street. गली means street. I'll just go back to the picture. So can you see here some of the wires hanging from here to there, isn't it? So kahan jodti, where it is being connected from here to there it is going, but what it is actually, so it is maybe electricity cables or it may be telephone cables, isn't it? So bijali ki taare, bijali means electricity, so bijali ki taare gali ko what? Transformer से जोड़ती होगी. So from the transformer it will be giving connection to all the houses in that street. Okay. Next telephone. Telephone की तारें, the telephone cables or the wires दूर स्थिति मुख्य दूरभाष बक्से से जुड़ती होगी. दूरभाष बक्से means you will have a post like lamp post, telephone post will be there in which you will have a bakse. Bakse means box in which you will have the various connections to different offices or the houses or the shops in that street. So it will be connecting all those things. Okay. And also cable, to watch television we need cables, isn't it? Cable के तार की तारें किसी टीवी टावर से जुड़ती होगी. So this cable wires which are being connected to some TV towers will also be running on the streets. Like that you can write it down. Okay. Sixth question. Cycle वाला कहाँ से आकर कहाँ जा रहा होगा? So there was a man standing with his cycle there. That cycle wala, from where he came and where will he go? So that is based on the visualization you're going to write. Maybe it is a morning time, so he might have come from his house. Okay. घर से आकर कार्यालय जा रहा होगा. He must be going to his office. कार्यालय means office. जा रहा होगा. Like that you can write it down. Okay. So next is सुनना और देखना. To hear and to see. NCERT द्वारा निर्मित श्रव्य कार्यक्रम Helen Keller. So you can listen to this program Helen Keller released by NCERT. Second one is Sui Paranjape द्वारा निर्देशित feature film Sparsh. So that is a film name Sparsh. You can put it and see it whenever you get time. Okay, during your holidays. Clear? So next is a reading for pleasure is given. Chuna aur dekhna. Chuna means to touch. Dekhna means to see. Okay, let's read what it is. तुम जानते हो ही हो कि हम आसपास की दुनिया को अपनी इंद्रियों की मदद से महसूस करते हैं. So you all know that we see the entire world around us with our sensory organs, with the help of our sensory organs. इधल्ला आंखों से देखते हैं. So through the eyes we see. कानों से सुनते हैं. Through the ears. कान अपना ears. सुनते means we hear. नाक से सूंघते हैं. नाक means nose. सूंघते means we smell through our nose. जीभ से स्वाद लेते हैं. जीभ अपना नाक. tongue. Through our tongue we taste. स्वाद means taste. और त्वचा से छूकर. त्वचा अपना touch. நம்ம கையை வச்சு टच பண்றோம். छूकरना touching. किसी चीज का अनुभव करते हैं. We identify the things.
आओ हम प्रयोगशाला में अपनी नजर और स्पर्श के माध्यम से कुछ प्रयोग करें. So let's go to the prayogoshala means laboratory, and through our eyes, nazar means through our sight, and sparsh means through our touch and feel. Let us do these. और चित्र बनाकर देखें कि हम लोग अपने आंखों से कितना बारीक अवलोकन पर पाते हैं और कितना छूकर. And let us make picture and finally conclude with our eyes what and all we are able to see, and by touching, छूकर means by touching what and all you are able to do. Okay. इस गतिविधि के लिए 8-10 किस्म के पेड़ पौधों की पत्तों की जरूरत होगी और 3-4 साथियों की भी. So what you have to do, गतिविधि means to do this experiment, you have to collect 8 to 10 different types of the leaves of the trees. पत्ती அப்படினா leaf, different types of leaves நாங்க கண்டிப்பா வேணும். और 3-4 साथियों की, you can make yourself into 4 people group. जितने दोस्त इस प्रयोग में शामिल होना चाहे उतने कागज के लिफाफे पास रखे होंगे जिससे आसपास आर पार देखे. That is, जितने दोस्त, if you are 4 numbers, then take 4 papers and 4 covers. लिफाफे அப்படினா cover, envelope covers எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்க பக்கத்துல. Okay. हर लिफाफे में in each and every envelope cover एक पत्ती डाल लो. So you place 1 leaf inside that cover. हर दोस्त को एक लिफाफा दे दो. Give each everyone 1 envelope cover which contains the leaf. हाँ, यह ध्यान रखना कि तुम्हारे दोस्त यह न देख पाए कि उनके लिफाफा में किस तरह की पत्ती डाली जा रही है. This you take it into your mind that what your friend should not know what leaf you are putting and giving it to him. சரியா? அந்த கவர்க்குள்ள இருக்க லீஃப் என்ன லீஃப்னா அவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது. அந்த மாதிரி நீங்க பிளான் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். अब तुम अपने दोस्तों से यह कहो. Now you tell it to your friends that वे अपने अपने हाथ डालकर पत्ती को छुए. Now let them put their hands inside that cover and just touch and see that leaf. Okay. अंदाजा लगाए कि उनके पास किस पौधे की पत्ती है. पत्ती के आकार के टटोले और उसका चित्र बनाने का प्रयास करें. Now after that place a paper near them and ask them to draw the picture of the leaf what they have touched and felt, not by seeing. Okay. इस पूरी प्रक्रिया में पत्ती को आंखों से नहीं देखना है. So to complete this activity you should never look into it with your eyes, only by touching and feeling. Okay. नेक्स्ट, जब बिन देखे चित्र बनाने का कार्य पूरा हो जाए तो देन बाय विदाउट बिना देखे, विदाउट सीइंग, यू हैव ड्रॉन द पिक्चर ऑफ इट. इफ द टास्क इज बीइंग कंप्लीटेड तो लिफाफे से पत्ती निकालकर देन यू टेक दैट लीफ आउट ऑफ दैट एनवेलप, सामने रखे और उसे देखकर चित्र बनाए. देन यू कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड अगेन मेक अ पिक्चर. कौन सा चित्र ज्यादा बारीकी से बना है. सो नाउ यू कंपेयर द पिक्चर्स व्हिच यू हैव ड्रॉन विदाउट सीइंग द लीफ एंड नाउ यू हैव सीन द लीफ. ओके, जस्ट कंपेयर इट. बिना देखे बनाया हुआ या देखकर बनाया हुआ, दैट इज कंपैरिजन. क्या और कोई तरीका भी है जिससे पत्ती को बिना देखे पहचानने की सहयोग मिल सकता है. इज देयर एनी अदर वे. तरीका मीन्स वे, कोई तरीका है जिससे पत्ती को बिना देखने, विदाउट सीइंग द लीफ, यू कैन आइडेंटिफाई दैट. ऑल्सो यू कैन डिस्कस इट अमंग योर फ्रेंड्स. ओके, फाइन. So with this we have come to the end of the session. Hope you all understood this lesson and its exercises part. Now please subscribe to my South to North YouTube channel. If you have any queries, please mail me at vijiswebacademy@gmail.com or you can WhatsApp to this number. See you soon at the next lesson. Thank you.